of day, the in is used. But condition है, कौन condition में यदि part of day में the लागे को रहन छ भने तो in लगाउने, और यदि the छै न भने तो at लगाउने. जैसे कि सीधे morning छ at morning, और यदि the morning छ भने तो in the morning. कते confuse कर छ. यदि night छ भने at night, and the night in the night. So I have written here, if part of day is linked with the, यदि part of day में the लागे को छवने के लागत in, यदि the छै न भने मेरे सबै विद्यार्थी बुझ्छ. Like example है, in the morning, यहाँ in लाग्यो. In the evening, in लाग्यो. किन लाग्यो? किनकि द लाग्यो कुछ. आज द हुँदैन भने तब कहिले बिर्दैन. गुड. कॉन्टिनेंट वन क्यों छ महादेश? Role 4 for big places like town, city, country, continent, preposition in is used. Example, in Nepal, in Pokhara, in Asia, etc. Write down. Can I repeat? Here, sari a part of day. Sari क्या था? Ladies को
सपोज कैमरा हम सुन ना सो ड्यूरिंग द पीरियड म 5 मिनट में आउने छु हैन म 1 सप्ताह में आउने छु कुनै पिरियड को शो गर्नको लागि के लगाउनु पर्छ इन एग्जांपल he will return here in 5 days 5 दिन में आउने छ हैन नंबर 2 I am coming in 5 minutes do you follow सर अलि क्यामेरा साइड गर्नु न हाँ तो कैमरा है ये कैमरा छ वहाँ छ साइड गर्दिन कहाँ छ कैमरा को साइड भन्छ विद्यार्थीहरू सम्भव छैन बुवा भविष्य सम्भव छैन राम्रोसँग हेरिरहेको छ अलि साइडमा एक्जाम्पल हेरिरहेको छ सेकेन्डको एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल था he will return here in 5 days he will return here in 5 days number second example था I am coming in 5 minutes have you written this as sir. now can I rub everyone has Janki is writing now Janki जय मां जानकी या करो रक्षा प्राण की है ना ला रोल 7 there are some words which always take preposition in सर कैमरा साइड गर्नुहोस् न नि अनि क्यामेरा साइड कर दियो देखाउने दिक्कत भन्नु होला सर लेफ्ट साइडमा अलि गरिदिनु लागि मैले भनिदियो सर गरिरहनु हुन्छ नम्बर एग्जाम्पल यु से these are important preposition in examination believe in number 2 absorb माने हुन्छ तल्लीन हुनु कुनै काममा हैन जैसे कि यू आर एब्जॉर्ब इन रीडिंग नाउ इंटरेस्ट इन for
faith faith in faith माने केउन छ विश्वास progress in backward माने पिछड़े को he is backward in mathematics involved माने he is involved in this case फंसे को है ना who are in engaged means व्यस्त he is very engaged in his work born in now use of preposition on tomorrow I ask all the preposition you will come to read okay sir engaged in हुन्छ नि हाँ in हुन्छ engaged in कहाँ दिनु भएछ in written you have now use of on can rub after preposition transformation will be taught transformation do you know transformation how to change affirmative into negative how to change into affirmative into WH question that is called transformation yes sir use of on पढ़ाई स्टार्ट कर दिन्छु धेरै टाइम लाग्छ रोल 1 to show something is एवं माने माछी on is used कोई चीज माछी माछ त्यसको दर्शाउनको लागि के लिख्ने on तो एवं पढ़ाई रुचि on एवं on the table on the tree on the rack माने क्यों छ रैक माने ताख लागल छै रोल रोल 2 before day and date
प्रीपोजिशन क्या मानी गेला हम करे हां एग्जाम्पल ऑन संडे हानि में काम करबा ऑन बाती में बुझबना बाती on 16th जुलाई फिर डेट है यो डे है यो बुझ लियो मिनट 8 मिनट 13 सेकंड मतलब बाकी 8 मिनट 8 मिनट राइट तो बाकी now then Arabic have you written right fast please written yes sir don't cry roll 3 for subject matter meter भरे हल्ला नगर्नुको लागि preposition ये ना बंद कर is used. Now you see here example. Write an essay on the rainy season. Rainy season subject matter है Number 2, he can speak on English language. फिर ऑन को प्रयोग सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज रेनी सीजन यानी कोनो सब्जेक्ट मैटर पर ये लिखना चाहता है या बोलना चाहता है तो ऑन को प्रयोग हो ready for this now finish time the rest will be taught next day can Arabic लताय सबैजना रिकनेक्ट गर्ने 8 क्लासको म्याच स्टार्ट हुन्छ अब मिटिङ इन गरिरहेको छ हुन्छ